Hi everyone, hope you are all well. Today we are going to study inward radial flow reaction turbine. And one of the examples of inward radial flow reaction turbine is Francis turbine. Okay, so this is the whole setup of inward radial flow reaction turbine. So in this the different components are one is penstock, is this pipeline, and this casing. This casing is known as spiral casing, and this outer wheel This outer wheel is known as guide wheel, and this inner wheel is known as runner. In addition to all these components, we have one more component that is draft tube, and that is not shown here, but we will discuss draft tube here as well. Okay, so first of all, let's know what is inward radial flow reaction turbine. What is inward radial flow reaction turbine? The first point in this is water flows, water flows in inward water flows in inward radial direction inward radial direction inward radial direction through the runner through the runner. Okay, this is the runner here, and water flows in the this is inward radial direction. This is inward radial direction. Okay, so in inward radial flow reaction turbine, water flows in the inward radial direction through the runner. The second thing in this is energy available with water. Energy available with water at inlet of runner is kinetic energy plus pressure energy. Energy available with water at inlet of runner is kinetic energy and pressure energy. Okay, and one more point in this is uh, as water flows through the runner, as water flows through the runner, as water flows through the runner, some part of pressure energy is converted into kinetic energy. Okay, so these are the three important things about inward radial flow reaction turbine. First is that water flows in inward radial direction through the runner, and second thing is energy available with water at the inlet of runner is kinetic energy plus pressure energy, and third thing is as water flows through the runner, some part of pressure energy is converted into kinetic energy. So these are the three things about inward radial flow or reaction turbine. Now we will discuss this setup in detail. First we have penstock. First is penstock. What is penstock? Penstock is a pipeline. Pipeline which brings water to the turbine. Penstock is a pipeline which brings water to the turbine. Okay, and second thing is spiral casing. Second component of inward radial flow reaction turbine is spiral casing. So what is spiral casing?
So what is spiral casing? Casing of spiral shape. It is the casing of spiral shape enclosing the whole setup inside. This is first point. Okay, so next point, it acts as a protective cover for the whole setup inside, for the whole setup inside. So these are the 2 points. And third point, in spiral casing is spiral casing था यहाँ पे. तो third point in spiral casing is it has a gradually decreasing area. It has a gradually decreasing area of cross section. आप यहाँ पे देख सकते हैं, its area of cross section is decreasing gradually. Why? It has a gradually decreasing area of cross section, which ensures the supply of water, to the runner at constant velocity. तो यहाँ पे देखो ये कैसे होता है. ये देखो, इसका ये जो स्पाइरल केसिंग है ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली. तो इस शेप में इसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे जैसे वाटर यहाँ से चलता है तो वाटर इज सप्लाइड. वाटर यहाँ से इस स्पाइरल केसिंग में से ये वाटर लॉस होता है. यहाँ पे वाटर यहाँ से देखो वाटर सप्लाई हो, यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है, यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है, यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है. तो यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है, यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है, यहाँ से भी वाटर अंदर जाता है. तो इसके अंदर जो है ना वाटर का लॉस हो जाता है. तो इस वाटर लॉस की वजह से इसके अंदर फ्लो रेट डिक्रीज हो जाती है. फ्लो रेट डिक्रीज होने की वजह से अगर इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज नहीं होगा तो जो वाटर की जो वेलोसिटी है ना दैट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. क्यों? बिकॉज Q इज इक्वल टू A इंटू V. जैसे जैसे वाटर यहाँ से लॉस होता है, वाटर यहाँ से एंटर होता है गाइड व्हील में, गाइड व्हील के अंदर, गाइड व्हील से ये वाटर किसके अंदर एंटर हो जाता है? रनर के अंदर. तो यहाँ जैसे तो क्या हो जाता है, जैसे वाटर इसके अंदर जाता है, यहाँ भी इसके अंदर जाता है, यहाँ भी इसके अंदर जाता है, तो इसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है दैट डिक्रीजेस. तो वाटर की अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से इसके अंदर डिस्चार्ज, इसका जो है ना डिस्चार्ज, इसका मतलब है कि डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाता है. तो जब डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो वेलोसिटी इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो इस तरह से हम इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बनाने की वजह से हम क्या करते हैं,
इस वाटर की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये पर्पस है इसका ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो और एक चीज है इसके अंदर, spiral casing remains always full of water, always full of water. Spiral casing and this whole setup, it remains always full of water. दैट मीन्स इसके अंदर जो वाटर होता है ना, इसके अंदर जो वाटर होता है ना, दैट इज अंडर प्रेशर, ठीक है। तो spiral casing remains always full of water. Spiral casing and this whole setup remains always full of water. So this was about spiral casing. Now we are going to study guide mechanism. Next thing we have is guide wheel, guide mechanism, guide mechanism. गाइड मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास है, गाइड मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास आता है सर्कुलर it is a circular, it is a stationary, it is a stationary circular wheel all around the circumference of runner. Okay, on which guide vanes are fixed. Is a stationary circular wheel all around the circumference of runner on which guide vanes are fixed. Okay, so next thing, what is the function of guide mechanism? Guide mechanism, it guides water to the runner, it guides water to the runner. Okay, and ensures that water strikes the runner without shock. Okay, it guides water to the runner and ensures that water strikes the runner without shock. Without shock, what does without shock means? एक होता है इम्पल्स, रनर वैन के ऊपर वाटर इस तरह से स्ट्राइक कर सकता है, दैट इज इम्पैक्ट. तो दिस इज वन वे ऑफ स्ट्राइकिंग द वैन ऑफ द रनर. तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इसके ऊपर.
इट विल ये अगर वाटर इस तरह से वैन के ऊपर स्ट्राइक करेगा ना, तो इट विल क्रिएट ए शॉक, यहाँ पे इम्पैक्ट लोड आएगा वैन के ऊपर। तो हम गाइड व्हील क्या करता है, गाइड व्हील इस वैन के ऊपर इसको ऐसे स्ट्राइक कराता है, ऐसे स्ट्राइक कराता है, तो दिस मीन्स विदाउट शॉक। ऐसे अगर ये हमारे पास वैन है, तो अगर वाटर इस तरह से स्ट्राइक करेगा, तो इट मीन्स वाटर इज स्ट्राइकिंग द वैन विदाउट शॉक। लेकिन अगर वाटर इस तरह से स्ट्राइक करेगा ना, तो इस वैन के ऊपर इम्पैक्ट लोड आएगा, तो इट मीन्स वाटर इज स्ट्राइकिंग द रनर विथ शॉक। ओके। लेकिन जो गाइड वैन जो हम इस गाइड व्हील क्या करता है, या गाइड व्हील के ऊपर जो गाइड वेन्स क्या होती है, वो क्या करती है, दे इंश्योर दैट water strikes the runner without shock. Without shock means that water strikes in this way, in this way. With shock, with striking with shock means striking this way. Okay, that means this is applying impact load on the van. Okay, and striking without shock means striking the van in this way. This is striking without shock, and this is striking with shock. Okay, so these guide vans ensure that water strikes the runner without shock. This is without shock. So this was all about guide mechanism and the function of guide mechanism. Okay, and one more important thing about guide mechanism is that the vanes which are fixed on the guide wheel, the vanes which are fixed on the guide wheel, we can move them. Okay, so by moving the guide vanes, by moving the guide vanes, by moving the guide vanes, we can vary the amount of water. We can vary the amount of water striking the runner. So these were the important things about guide mechanism. Okay. Now we have runner. Third component of inward radial flow reaction turbine is runner. Okay, runner. So what is runner? It is also a circular wheel. It is a circular wheel. It is a circular wheel on which radial curved vanes are fixed. Okay, so next thing in case of runner is that vanes are so designed vanes are so designed vanes are so designed that water enters and leaves them. Water enters and leaves them without shock. And third thing in case of runner is runner converts. So what the function of runner?
runner converts runner converts energy of water energy of water energy of water into shaft power. तो ये सब था इसके बारे में, रनर के बारे में. रनर कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ वाटर into shaft power. Okay, so it is a circular wheel on which radial curved vanes are fixed. It is a circular wheel. Here we will add one more thing. It is a circular wheel keyed to the shaft. Keyed to the shaft. It is a circular wheel keyed to the shaft on which radial curved vanes are fixed. It is a circular wheel keyed to the shaft on which radial curved vanes are fixed. Okay, vanes are so designed that water enters and leaves them without shock. And what is the function of runner? Runner converts energy of water into shaft power. So this is penstock, cross spiral casing, and this wheel is guide wheel, and this inside wheel is runner, and this runner is keyed to the shaft. Water enters into the penstock. Water enters water enters inside the turbine through penstock and moves through the scroll casing, flows through the scroll casing, and here through through guide vanes, water is supplied to the runner. A runner rotates, and the rotation of this runner rotates the shaft, and this shaft is connected to the generator. The rotation of the shaft runs the generator, and in this way hydraulic energy of water is converted into electrical energy. So these are the components of these are different components of this inward radial flow reaction turbine. One more component in inward radial flow reaction turbine is draft tube. So one more component in this inward radial flow reaction turbine is draft tube. Draft tube, it is the tube of increasing cross section. ऐसा होता है ये. This is the cross section at inlet. This is the cross section at inlet, and this is the cross section. This is the cross section. This is the cross section at outlet. Okay. This is the cross section at inlet, and this is the cross section at outlet. So what is draft tube? Tube of increasing cross section. So what is the function of tube of increasing cross section? Fixed at the exit of turbine. Fixed at the exit of turbine. So what is the function of draft tube? टरबाइन के एग्जिट के ऊपर टरबाइन के एग्जिट पर जो वाटर की प्रेशर है ना, जो वाटर का प्रेशर होता है ना, दैट इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन को फिक्स करते हैं एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन. तो इससे क्या हो जाता है, अच्छा, जब टरबाइन के एग्जिट के ऊपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, वाटर का जो वाटर टरबाइन से एग्जिट नहीं कर पाता है, क्योंकि वाटर का जो प्रेशर है कम होता है और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वाटर टरबाइन से एग्जिट नहीं कर पाता है. तो हम क्या करते हैं,
हम टरबाइन के एग्जिट के ऊपर हम ये ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन फिक्स करते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जब हमारा एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वाटर का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। वाटर का प्रेशर हम या इस ट्यूब के थ्रू हम वाटर का प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर कम था, इस ट्यूब के थ्रू हम उस वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो जिसकी वजह से, तो इन दिस वे, तो इसकी वजह से हम वाटर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वाटर टरबाइन के एग्जिट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के में हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब में हम प्रेशर, वाटर का प्रेशर जो है ना इंक्रीज करते हैं, जिससे उसको, हाँ, जिससे वो इजीली टेल रेस चैनल के अंदर एग्जिट हो जाता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है दैट हाई प्रेशर वाटर उसको हम और किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और this high pressure water can be used for any other purpose. Okay, so tube of increasing cross section fixed at exit of the turbine. Tube of increasing cross section fixed at the exit of turbine. It is used to increase the pressure energy of water. Used to increase the pressure energy of water so that water can exit, the turbine, okay. Also, the high pressure energy water, the high pressure energy water can be used for some other purpose. So this was all about draft tube. तो इसके साथ हमारा जो ये टॉपिक इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, तो वो ख़त्म हो जाती है। That is all for now. Okay, thank you.